दोस्तों, हम सभी तो बीमार पड़ चुके हैं। फीवर, कोल्ड, कफ, ऐसी बीमारी हम सब ने कभी ना कभी सफ़र की है ना। और ये डिजीज़ ही ऐसा होता है, किसी को नहीं छोड़ते। तो आज हम बात करेंगे जब हम सफ़रिंग करते हैं डिजीज़ में, स्पेशली जो हर टाइम आते रहते हैं, फीवर, कफ, कोल्ड, ऐसी जो स्नीज़ होता है, ऐसी जब बीमारी होते हैं हम हमारे, तो हमारा अंदर क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे बीमारी जैसे कोल्ड, कफ, फीवर, डायरिया, स्टोमक एक्ट, हेड एक्ट, वॉमिटिंग, ब्लॉक नोज एट्सेट्रा। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि ये ऐसे डिजीज़ेस है जिसको अगेंस्ट हमको फाइट करना पड़ेगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये जो बीमारियां हैं वो हमारी बॉडी में नेचुरली आते हैं। ये जो बीमारियां हैं वो हमको डिटॉक्स करने के लिए आते हैं नेचुरली। हम जब अननेचुरल चीज़ें खाते हैं जैसे कि ब्रेड, पास्ता, कोई मेडिसिन हो गए, बाहर का खाना हो गया जो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होते, वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते। तो जो अनडाइजेस्टेड टॉक्सिन्स रहते हैं हमारे अंदर, वो उसको निकालने के लिए ये डिटॉक्सिंग डिजीजेस हमको अटैक करते हैं। दिस इलनेसेस कम्स टू डिटॉक्सिफाई एंड क्लीन आवर बॉडी। द वेस्टेज which are inside our body, this should be cleaned up. This is nature's attempt to clean up the wastes and toxins in our body. हमारे कारण कुछ ऐसी चीज़ हमारे अंदर चले जाते हैं, ऐसी टॉक्सिन्स वेस्ट हो जाते हैं हमारे अंदर जो डिटॉक्स चैनल से बाहर नहीं निकल सकता। क्या क्या है हमारे 4 डिटॉक्स चैनल? बॉडी के 4 डिटॉक्स चैनल्स है स्टूल, यूरिन, स्वेट, ब्रीथ, जिससे हमारे बॉडी का जो वेस्ट है वो बाहर जाता है। डायरिया होने पर स्टूल से जो वेस्ट है, जो डाइजेशन नहीं हो पाया था, वो बाहर निकल जाता है। और जब फीवर होता है तब स्वेट से, माउथ से वॉमिट होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है वो बाहर निकल जाता है। For this illnesses, if you go for chemicals, medicines, then it can even cause more side effects, which can even cause long-term diseases. तो हम करें तो क्या करें इस डिजीज से छुटकारा पाने के लिए? There are 5 steps that you must follow when you are sick in this type of fever, sneezes and cough and colds. So let's see what are they. Number 1 में आता है फास्टिंग। हाँ, हम में से बहुत सारे ऐसे हैं कि हम ऐसे सोचते हैं कि हम जब बीमार पड़ जाते हैं छोटे मोटे कोई भी डिजीज़ में, जैसे कि फीवर हो गए, तब हमको ज़्यादा फूड इंटेक करना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। हम अगर ज़्यादा फूड इंटेक करेंगे तो हमारा जो हीलिंग प्रोसेस है, जो अंदर काम कर रहे हैं, वो हीलिंग प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है, इंटरप्ट कर देते हैं ये फूड जाके, क्योंकि हीलिंग तो चल रहा था अंदर। तो हम अब अगर फूड ज़्यादा डाल देंगे हमारे पेट में, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए होगा, तो वो एनर्जी डाइजेस्टिंग करने के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो हीलिंग प्रोसेस चल रहा था हमारी बॉडी में, वो नहीं हो पाएगा, हीलिंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो एनर्जी था वो डाइजेस्टिंग करने के लिए ख़त्म हो जा रहा है ना। इसीलिए आपको जब फीवर या कोल्ड कुछ भी बीमारी होगा, तब जाके आप ज़्यादातर लिक्विड जो है, लिक्विड फूड इंटेक करना चाहिए आपको, जैसे कि कोकोनट वाटर हो गए, ज़्यादा पानी हो गए, फ्रूट्स का जूस हो गए, एशगर्ड जूस हो गए, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिटॉक्सिफाइंग है, आपके बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। वो सारे वेस्ट्स को बाहर करने के लिए ये हेल्प करेगा और आपको भी एनर्जी प्रोवाइड करते रहेगा। जब आप ये करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी फील होगा और आपका जो बॉडी है वो बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन भी हो जाएगा। तो आप लिक्विड इंटेक कीजिए जब आपको फीवर या कुछ भी बीमारी है तब, और ग्रेजुअली 2-3 दिन और 4-5 दिन में आप नॉर्मल डाइट में आ जाएगा। Have you ever seen a pipe of an old building? Nothing can pass through it, right? Because it is very dirty and sticked by all the old stuffs in it. The same thing happens with our intestine.
From the very first of our life, we are keeping on eating something which are sometimes unhealthy and sometimes healthy also. But whatever we eat are getting digested in our body and passed through in the form of stool and everything, all these things. But the intestine by which it is passing through, the food particles are still stuck in it. So dirty it is. It is that dirty, like a old pipe of a building. Can anything get passed through it? No. So the ultimate thing we have to do is to clean our intestine, and enema is the best process to do it. Let's see how to do it. First of all, you need a enema kit, which is easily available online. Wash the enema pot. Take 300 to 500 ml of water. Although the pot can hold more water, but we should not pressurize our body. To understand better how to do enema, you can watch more videos on it. Hold the water for about 10 minutes and then flash it down. And you will be shocked to see how much waste was there in your intestine. You will feel very good and fresh after doing this. The more clean intestine, the more energy it will give you to do your works every day. So many doctors and general physicians also suggest this to do for ourselves. Don't think that this is a new way of cleaning intestine. No, this is a very old way of practicing. From the very ancient time, this process has been going on till today. This process is completely natural and safe for your body. And what unsafe and unnatural is to carry all that dirty things in our body, and we keep on carrying the stuffs in our body from wherever we go, like from office to home to some other places like malls, restaurants, any place where we visit. Everywhere we carry this dirty things in our body. This is something very unnatural. Do it 2 times a day if you are sick, and if you are not sick, normally you can do it 2 to 3 times in a week. Now let us talk about number 3 process that you can follow when you are sick, and that is using wet pack. When you are sick, that time the uneven blood circulation happens in our body because of uneven heat, you can say. The temperature inside our body, it's not even in our body. That time we feel so sick, and here you can use wet pack. And the process of using wet pack is: take a cotton cloth of 2.5 meter of length and 2 feet of width. Fold it, wet it, and wrap it in your stomach. Again, take 2 strips of 2-inch wide cotton cloth and wrap it in your neck and also in your head. Again, these wet packs are available online, or you can also make it by your own by cutting cotton cloths. Using these simple wet packs on your body will help you to get rid of headache, depression, indigestion, and etc. Wet packs creates a situation of balancing both the hot and cold part of your body, which increases blood circulation, and for that reason your body gradually get rid of all types of diseases, which results to better body system and immunity. Now let us talk about one most heavenly detoxifying natural gift, and that is sunlight. Sunlight is the nature's most important gift that heals our body. Sunlight has properties that can kill all types of germs, molds, yeasts, any kind of funguses in our body. People who do not take sunlight suffer so many diseases, like their bones gets off, depression comes on. And in order to get rid of all the diseases, you must sunbathe whenever is possible. Especially you have to take it every day if possible.
Remember, we want the sunlight, not the heat. That's why do it in the morning or in the evening. For 30 minutes it's enough. Do wear cotton and breathable clothes on you. And keep it in mind that you have to wear as less clothes as possible so that the skin surface get the direct sunlight. And do not apply sunscreen while doing this. The next step is to do pranayama. When we do pranayama, that time our body breathes out the toxins from our breath, and when we respire, that time our body inside it cleanses up. The best time to do it is in empty stomach, in the morning or in the evening, and you must do it in outdoor, like in a park or in the roof, where you will get fresh and enough oxygen and fresh air, and then only it will give you the real power and real the benefit. So these were some steps that you must follow when you are feeling ill, and promotes your body to detoxify as quick as possible, and this helps the body to function better. So this much for today. If you think our video is helpful, click the subscribe button and also the bell icon to never miss any update. Thank you for watching.